Okay. So you're not a hoarder by कि बहुत सारे लोग हैं especially sports person ये जूता मैंने पहली मर्तबा 8 साल की उम्र में कोर्ट में पहना था. You're not. No, I'm You not. you you get detached. No, too neither easily. is. No, it's not that I get detached. I don't think there's an attachment with the shoe. I'm very Sure, practical. Yeah. So yeah, I prefer not to have I prefer to have attachment with people rather than things. So That's cool. Okay. Speaking of again, so अगले हमारे 3-4 मिनट जरा शो पे डेडिकेटेड रहेंगे. मुझे कुछ चीज़ और मुझे पूछनी है आपसे. When was the last time you visited Pakistan? last month. Okay. You were hosted by I think आपने कोई मैच भी देखा था वहाँ पे जाके and then शाइस्ता लोधी जो है she hosted probably I think Yeah, it we was had it that now. trip. Okay, okay, nice. So ये जो एक टैग है आपका मुझे हमें तो बड़ा पसंद है. कहते हैं आप इंडिया की बेटी हैं और पाकिस्तान की भाभी हैं. How often do you get this and then have you accepted this कि ठीक है अच्छा अब ये है तो है. I mean, I think initially when I was like 23 years old, it was a bit hard for me to accept myself as a bhabhi. I think it's a cultural thing as well. Like in Pakistan, I've realized that it's very cultural and it's respectful to say bhabhi. So I've understood that obviously. We've been married for a long time and I've accepted it. I think it's really nice the way people, the way they address you and they respect you. I think it's very sweet. Yeah, You're okay with bhabhi? Yeah, I mean, I'm 34. I'm more okay with it when I was 23, 24. You're getting that. ठीक है, चलो सही. How much do you understand cricket वैसे? You off stump, leg stump, dum dum? I mean, I understand a little bit, nothing special. We don't really. I think people think कि हमारे घर में सिर्फ या क्रिकेट या टेनिस की बात होती है. हमारे घर में क्रिकेट और टेनिस की बहुत कम बात होती है. We don't really sit and just watch. What's a normal conversation on the dinner table? मुझे लगे ये किसी ने ये किस किस्म का सवाल? मैं आपको पूछूं आपकी बीवी के साथ आप क्या बात मैं करते तो बता हैं? सकता हूँ. मेरा एक ही होता है यार ये खाना कैसा बना है. नहीं खैर nothing like that. नहीं मैं पकाती नहीं हूँ तो मेरे पे नहीं आता अच्छा वो. अपनी खाना कैसे बना है? मैं खैर बहुत ही मैंने फुल टिपिकल जवाब दिया है कि भाई बीवी की बात हो रही है तो खाने की बात करो. शर्म आनी चाहिए मुझे. आई एडमिट इट. थैंक यू सानिया. अच्छा मुझे सानिया बात बताइए यू आर एक्चुअली वेरी गुड एट हैंडलिंग प्रेस. आई मीन कुछ तो अभी मुझे ट्रेलर मिल गया बट स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक व्हेन यू काइंड ऑफ डिस्क्लोज्ड ठीक है आपकी शादी हो गई थी और देयर वाज ह्यूज मीडिया मतलब गिलोर जो वहाँ पे था. बट देन उसके बाद या उससे पहले बिकॉज नोबडी न्यू कि शोएब और आपकी जो भी थी मतलब जिस तरह से आपने यू हैड केप्ट इट अंडर रैप्स. तो बट कहीं आप लोग जाते होंगे कहीं मिलते होंगे. हाउ डिड दैट प्रोसेस हैपन? छुप के मिलते थे? जाहिर ही बात है. बट नहीं तो पता कहाँ चल पे जाता आप ना. ट्रैवल या वो कहीं आते अब मैं आपको कैसे बताऊं ये एक बातें? तो बताते हैं आप एक कुछ छोटा इधर मिलते थे दुबई में. दुबई में? अगर मैं दुबई में रहती हूँ और आपको नजर नहीं आती तो मैं यू थिंक कि मैं मिल नहीं सकती किसी से बिना आपको मालूम करे. अच्छा तो मतलब यार दुबई वाज द स्पॉट. ऑफ कोर्स मेक्स सेंस. Not the spot, but it was one of the spots. One of the spots. Okay, few days before you actually posted एक अमीरों की चाय आप पी रही थी. मुझे इसका नाम लेना हमेशा मुश्किल है बट अब आपको याद आ जाएगा. मैं यूजुअली नहीं पीती अमीरों वाली चाय. मैं दूध पत्ती तो वाली एक वो चाय कौन सी पीती जिसका हूँ. नाम सी से आता है? क्या आता है? कमाल करके कुछ थी. I'll tell you okay. कैमोमाइल टी. हाँ वही चाय जो सानिया पी रही थी उसके साथ अच्छा ये अमीरों वाली चाय है. ये इससे नींद मुझे अच्छी आती है इसलिए मैं पीती हूँ. आप ट्राई करें. अमीरों को नींद भी तो मुश्किल से आती है ना. पता नहीं उनसे पूछना चाहिए आपको. अच्छा भाई जरा गोल हो करके घर दिखाइए जरा. Anyway, so Sania, you are into dramas, like you watch you're pretty much some, you're hooked to television, right? Or maybe No, not hooked, but I do watch some. I mean, I've had some whenever I find time. Pandemic में we've all done different things. So मैंने I यहाँ started केक बनाया, watching. नेटफ्लिक्स देखा है और हमने सबकी कंपनी के स्टॉक्स ऊपर किए हैं. मेरा दिल मेरा दुश्मन कि आपने वो लगाया था पिक्चर. Are you following any of these dramas? Yeah, actually, I'm watching this drama called Jalan, which ended. I find the dramas quite extreme, but they're quite addictive. So I always I know Salman Bhai and Sabine who are the Salman Bhai who owns ARY. So they're very dear friends of ours. तो हम जब भी डिनर पे जाते हैं I was like सलमान भाई ये उसने क्यों इसे मरा क्यों था ये फलाना क्यों था. I was like उसको जिंदा छोड़ देते हैं. And he was like खत्म कैसे करते हैं अगर वो मर so I'm always asking him these questions like that he's like so my husband always tells me तुम्हें पता है ना ड्रामा है ये रियल में नहीं हो रही कोई चीज. But I am like that. I get very involved. हाँ. और जलन के अलावा That's it. I'm not watching anything else now. बस मेरा दिल मेरा दुश्मन और जलन. हाँ अभी खत्म हो गए. अब now I'll find something. आपने वो देखा प्यार के सदके? हाँ पुराना है ना. नहीं अब ज्यादा 5-6 महीने पहले की बात. अच्छा नहीं दूसरा था. Watch it. It's really interesting. Cool. It's quite interesting. Okay, कोई digital show मैंने सुना कि कोई it's in the pipeline. Are you working on it? Are you producing No, I've done it. We shot for it already. Oh, you shot? Yeah, so you are the
Yeah, I'm in it. I'm in as a guest appearance, but I play myself in it. It's on. It's actually more of a. It's more of a show to. It brings. There's a lot of things said about in this pandemic about COVID and because of the cough and the minute somebody coughs हमें लगता है उनको COVID हो गया लेकिन TB के बारे में ये show बना हुआ है. You better not have it, I'm telling you. Bad रैकेट से मार के घर से निकालूंगी मैं तुम लोगों को. But TB के बारे में this show is about that, and it's about bringing awareness about if you get tested for COVID, you've got certain symptoms. और आप ठीक नहीं हो रहे, so don't just think that it's a flu. You could have TB, and वो spread भी वैसे ही होता है, just like COVID does. So the show is about that. Okay. All right. Okay. So when do we expect it? It's already on air. I think Pella episode. Yeah, it's come on. It's on MTV. So. Oh, nice. Okay. Sure. We'll keep taking up these rules. Sania, a question about relationship advice. The reason why I'm asking you this, of course, I mean you're wearing multiple hats, and you're doing good. All of it. Thanks. But I just wanted to know, have you ever analyzed कि what's working for me? So what is it that's working for Sania and Shoaib? तो नहीं, I think like you said, understanding होती है. There are certain things that go without saying. वो तो every normal शादी में भी होते हैं. By normal I mean जो लोग हमेशा इकट्ठे रहते हैं, साथ रहते हैं. हम लोग तो we spend a lot of time apart. But having said that, I mean it's very hard. It's not easy at all. There's a lot that goes into it. There's a lot of work, like every marriage, and it's tough to be in a public marriage, so to say, because there's a constant pressure. You're always 5 दिन photo नहीं डालो तो they're like, are they fighting? Are they going to split? So it's always about that. I mean, we have both learned to live with it because we've been under the scanner for a long time in our lives, just separately as well and together as well. But I think it's about having trust and faith in each other and in the relationship, and I think that's what really keeps it going. Isse zyada, I don't think there is a lot to it. I think we all know once. I don't know if you're married, but if you're married, then you'll know, or if you're in a relationship for a long time, after a certain time, it's all about respect and friendship, and it turns into those kind of things. It's really not about, oh my God, I can't live without this person for 1 second. All that is really bachpana lagta hai that so over a period of time, you become more of friends, you become companions, you become, you share things with each other, you depend on each other. And I think that trust needs to be there between the two people for any relationship to work. Okay, nice. Thank you. That's a brilliant advice. Okay, Sania, you come from Hyderabad. Hyderabad की 2 चीजें बहुत मशहूर है, वहाँ की उर्दू और वहाँ की बिरयानी. जी. तो बिरयानी की बात मैं नहीं करूँगा, but उर्दू की I have few उर्दू के थोड़े से मुश्किल वर्ड आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप मीनिंग्स आपको आ जाएगा मुझे लगता है. अच्छा. और एक स्लैंग उर्दू की कुछ स्लैंग है, and then you just need to explain. Okay, मुखातिब. I have no idea. आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे सानिया मिर्जा अस्सलाम वालेकुम. I know the meaning of that. अच्छा चलो मुखातिब नहीं, हालांकि मैं इनसे मुखातिब हूँ, बट फिर भी इन्हें नहीं पता. Yeah, you know me. मुखातिब मतलब I'm addressing you. Oh, you're addressing. मुखातिब खिताब करना. अच्छा, मुझे आज पता चलेंगे बहुत सारे वर्ड. आज फिर आप शोएब से आप इस तरह से बात. My mother-in-law will be very happy.